Good evening, friends. It's Saturday, so a story time. It's a true story, carries a very, very important message. बहुत ज़्यादा relevant है, especially to the youngsters like you. हम तो थोड़े बूढ़े हो गए, मतलब ना बहुत ही बूढ़े हो गए, ना बहुत यंग है, थोड़े बीच में अटके हुए हैं. मैसेज क्या है वो सस्पेंस रखता हूँ. पहले स्टोरी बोलता हूँ और फिर मैसेज क्या है आप में से कितने लोगों को समझेगा मालूम नहीं. आपने थंबनेल देखा होगा तो समझा होगा शायद. बनाएंगे. 1950, 14th Jan 1950. There's a kid which was born in Jaunpur district of Uttar Pradesh, a typical average middle income family. Within a few days of being born, he lost his eyesight. कुछ हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने, whatever it could be. पूरी आंखों की रोशनी या जो भी आप बोलते हो हिंदी में वो चली गई. घर वालों ने बहुत सारा कोशिश किया कि डॉक्टर के पास लेके गए. इवन दे ब्रॉट हिम टू द बॉम्बे. हिज फादर वाज वर्किंग इन बॉम्बे एट दैट टाइम. कुछ कर नहीं पाए. कुछ तो डिसीज हुआ होगा, कुछ हो गया होगा. एंड उस जमाने में उतना मेडिकल साइंस या टेक्नोलॉजी भी उतना एडवांस नहीं होगा. ही लॉस्ट हिज आई साइट. सिंस दैट डेट टिल टुडे दिस पर्सन इज ब्लाइंड. बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड, ऑब्वियसली उस जमाने में इतने छोटे एज पे तो समझा नहीं होगा, लेकिन हिज ग्रैंड मदर started teaching him about Sanskrit or shlok or various things about various stories about Shri Ram. तो संस्कृत के कुछ श्लोक्स है या सुभाषित बोलते हैं वो उनको बोलते गए. एंड ही यूज्ड टू grasp it. However, lot of people within the family or friends obviously started ignoring him, but his grandmother kept on taking efforts on him. This boy started ग्रास्पिंग इट. बट कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला, कोई स्कूल नहीं मिला. बहुत इन बच्चों को जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं इनको स्कूल या बाकी के फैसिलिटीज बहुत मुश्किल से मिलते हैं. बहुत मुश्किल से मिलते हैं. अगर आप 15 इस साल के 26 जनवरी को अगर आपने अटेंड किया था तो मैंने यहाँ पर अपने फ्रेटर्निटी में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है भूषण तोषनीवाल, पिंपरी चिंचवड से. भूषण को बुलाया था. तो इनको स्कूल वगैरह फाइंड करने में बहुत मुश्किल जाता है. ब्रेल. And the person whom I'm referring to has not even touched Braille till date. But at the end of it, when I will tell you, you'll go mad. If you understand. तो इनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला ऑलमोस्ट टिल 16-17 years of age. No formal education, nothing. Only education that you could get is from grandparents. जो भी घर के अंदर था सुनाई देता था, बस उतना ही है. At the age of 8-9, he started reciting those shloks or subhashits or explaining Ram Katha. उस जमाने में गांव में ये बहुत चलता था. तो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर उन्होंने ये बच्चों को या वहां के लोगों को बोलना चालू किया. बट लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट pay proper respect to him in early stage of life. Today he is a god. 17 साल से उनको एक यूनिवर्सिटी मिला. संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है संस्कृत के अंदर. मतलब इंडिया में अगर मैक्सिमम रिसर्च अगर कहां पर देखेंगे तो वो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में होता है इंडिया के अंदर. सो ही वेंट आउट देयर. ही कुड स्टार्टेड टेकिंग अ फॉर्मल एजुकेशन इन संस्कृत एंड स्टार्टेड taking various degrees and could grasp multiple degrees in language at a very fast rapid speed, because over the years, even though he could not see this world, he has not seen this world till date, he developed that grasping power through listening so much that he could complete the multiple degrees at the fastest possible rate. University Grants Commission gave him a gold medal for that, which was to be given by the then Prime Minister Indira Gandhi. And Indira Gandhi, when she understood his story, and she offered to him that we don't have the eye replacement surgery in India at that time. Obviously, we had just become independent, and the
बहुत सारा टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुआ था. You go to the foreign country, I will bear your entire cost personally, not out of government funds. And he rejected that particular offer. He says that there is nothing to be seen in this particular world. उनके फैमिली के कुछ रिलेटिव्स या मेंबर्स ने उनको अपशकुन माना था एक शादी के अंदर. इन्होंने शादी में आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो दूल्हा दुल्हन है उन्होंने उनको देख लिया तो कुछ तो अपशकुन होगा. तो he said that in this world where even my family members or relatives treated me like this, what I want to see in this world, I don't want to see anything in this particular world. I'm good as what I am. तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया भगवान श्री राम के ऊपर. और कालिदास, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, एक कवि हुआ करते बहुत ग्रेट कवि, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा था. तो उसके ऊपर कालिदास जी ने लिखा था मेरे से, कालिदास, हाँ. तो उसके ऊपर उन्होंने उसका बहुत सारा रिसर्च करके उसके ऊपर, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो बिकॉज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इज नॉट दैट गुड. तो उन्होंने उसके ऊपर जस्ट समवन चेक इट आउट, बराबर है ना मेरे हिसाब से जितना मेरे मेमोरी में था. तो उन्होंने रामचरितमानस को एडिट करके उसके पूरे जो लर्निंग्स है, इट इज नथिंग अबाउट रिलीजन, हाउ अ ह्यूमैनिटी शुड प्रॉस्पर, हाउ ह्यूमैनिटी, तुलसीदास, हाँ दैट्स व्हाट आई सेड, तुलसीदास का उन्होंने तुलसी पीठ भी सेटअप किया हुआ है चित्रकूट में. सो तुलसीदास ने लिखा था. तो उस रामचरितमानस का एडिट करके वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिलीज किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिलीज किया था. व्हाट ही डिड देयर आफ्टर वाज समथिंग ग्रेट. वो तुलसी पीठ उन्होंने खुद सेटअप किया हुआ है, रामचरितमानस एडिट किया, सब कुछ किया. बट व्हाट टू इंसिडेंट, बहुत सारी चीजें. ही इज अ मास्टर ओवर अबाउट 12 लैंग्वेजेस टुडे. He has authored more than 50 books by way of a dictation, obviously. He has not used a braille. He has set up the only one university in our country where the criteria for admission is you should be specially abled child. You have some physical disability, but that physical disability should not remain. We will train you, we'll try to make you a job oriented. So all those persons, the criteria is only that. And that's the only university which is there exclusively. In every university you have an admission for a specially able children, but specially making a university for people and trying to make them compete with the rest of the world. एक मूवी आया था पलकी या चलकी चल, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट एक्ट्रेस. स्ट्रॉ, ऐसा कुछ तो स्ट्रॉ नाम था, आई डोंट रिकलेक्ट द नेम. मार्गारिटा विद द स्ट्रॉ, हाँ आई थिंक वो मूवी के अंदर उन्होंने वो बहुत अच्छे सीखा है कि ऐसे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड जो होते हैं उनको कितने डिफिकल्टीज फेस करने होते हैं. दैट इज यूनिवर्सिटी दैट ही हैज सेट अप. He has done so much of understanding of religion and everything that United Nations called him for the purpose of giving a lecture on a peace, how to, because that was somewhere around 2000 when globally many countries were making missiles, how to approach and how to make a peace development. तो यूनाइटेड नेशंस ने उनको कॉल किया था. इवन इंडिया के बाबरी मस्जिद का जो भी डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज नोबडी हैड स्टडीड सो मच ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट और व्हाट वाज देयर एट दैट टाइम, किसी ने टेस्ट नहीं किया था. सो ही वाज one of the very important person who played a role of maintaining a harmony and ensuring that both the religions should be maintained. There could be some controversial things, obviously religion जब भी आता है तो इंडिया में आपको controversial sites मिलेगा. I am not interested in what religion. The person is originally called as Giridhar Mishra, born as Giridhar Mishra, but today he is no longer called as a Giridhar Mishra. He is called as Ramabhadracharya. During in Hindus, there is some religious ranking, so he is the fourth serving Ramabhadracharya to the best of my knowledge. What it tells you, message क्या है इस story में से? 73 years of age, alive even today, and will complete a century for sure. What message it tells you? Converting your weakness into your strength. Imagine a situation, this boy as a maybe a 3-month-old, a 4-month-old boy. You forget religion. My objective is not to tell you about religion, Bhagwan Shri Ram or anything else. Religion is secondary. Look at the person, what he did, what for which religion he worked. That is all secondary. You might find a
on a social media or here there will be always sites from people talking about Hindu, some people talking about Islam or uh, other things. That is all irrelevant. What is content relevant out here is this boy over a period of time could convert his entire weakness of not able to see the world through an listening ability. And there are so many kids out there. That university's name I don't recollect. He's in India. He's going to be the vice chancellor of university, is a governor of the state, and vice chancellor is someone else. He's going to serve as a chancellor of that university until he is alive. That's the only exception that is there in our country. Rajnath Singh, when he was the chief minister of Uttar Pradesh, he had passed a law in Uttar Pradesh Assembly at that time. Very few exceptions. I don't remember the name of the university. Huh? Jagat Guru Ram Bhadracharya Divyang University. Okay, that's a university. How? See, imagine handling for 3 to 4,000 kids like this every year is not a joke. He converted entire his weakness into what? Strength. And you must develop that ability. Your weakness can be communication skill while doing a CA course or commerce profession course, whatever you are doing. Weakness can be English. Weakness can be ability to communicate to the public at large. When you come down in front of, let's say, 10, 20 people or 40, 50 people, you start shivering, or you can't speak, you can't explain your thought process. It could be anything. You could not understand productive use of technology. You might get, let's say, uh, completely under stress when you find out something difficult or something extraordinary. Whatever. आपका weakness क्या है? I don't know. You find out your weakness and try to convert that weakness into strength. आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे? ये बोलना बहुत आसान है. Identify first of all your weakness. I'll tell you, my entire education was from Marathi medium. So we had learned English in Marathi. Our English was taught from 5th standard onwards. So initially when I came down to CA course, I found English to be much tougher. But I decided, okay, it is tougher. I cannot understand it. What I'm not able to understand, I'm not able to speak. Okay, बात करना है ना. Next step. I'm talking in Hindi basically because of this particular building. This building has taught me a lot of Hindi. So I may not be able to communicate properly, but first let me try to understand the language. So I started reading what? Books, newspapers, and English movies with the subtitles. With subtitles, whatever I can understand. I might not be able to communicate easily. आर्टिकलशिप में मुझे मौका मिलेगा, लेकिन उसके पहले क्या करने का? फालतू का शोरूम में जाने का, उसे इंग्लिश में बात करने का कोशिश करने का. 2-4 लोग हकल मतलब बाहर निकल देते थे. ठीक है ना? निकलने के बाहर कुछ नहीं, कॉल सेंटर पे फालतू का फोन करके इंग्लिश में बात करने की कोशिश करने का. You try. You find out your own methods of communicating in English as much as possible, even if you make whatever blunders you want to make up. Find out your weakness. I found out my weakness was technology because we had no exposure to computers. So I need to learn more about computers, but I said I want to learn only about the productive use of technology. So start working, take a real life situation, start working on Microsoft Excel, start working on, let's say, maybe in your case, Python, Tableau, R at a later stage of life, not right now. First, get a grab on Excel. तो आपको आपका वीकनेस ढूंढना पड़ेगा. आपका वीकनेस कुड बी, यू कुड बी गेटिंग अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, घर में माँ बाप के झगड़े चल रहे हैं, या रिलेटिव्स के झगड़े चल रहे हैं, या मेडिकल इश्यूज है. यू माइट बी गेटिंग अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. क्या प्रॉब्लम है आपके घर में मुझे नहीं मालूम. हो सकते प्रॉब्लम, इट्स ओके. वो आपका वीकनेस बन सकता होगा, क्योंकि आपको ये सब चीजें देख के आप इरिटेट होते हो गए, या आप डर जाते हो गए, या आपको क्या होता है, आई डोंट नो. अब ये आपका वीकनेस है, अब इसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज योर लुकआउट. आपका हर एक का सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा. The majority people try to run away from the situation. Running away from the situation is not going to help. Face that particular situation bluntly. Costing tough लग रहा है, accounts tough लग रहा है, tax tough लग रहा है, law tough लग रहा है, lot tough लग रहा है, मुझे law tough लग रहा है, मुझे accounts का ये नहीं आता, मुझे accounts कुछ नहीं समझता, या मुझे economics कुछ नहीं समझता है. जो बोलना है बोलो, या regression, derivatives, ये दिमाग खराब करता है. ये बोलने से डर नहीं जाने वाला ना भाई साहब. मेरे को लॉ टफ लगता है, वो बोलने से नहीं जाना. लॉ का क्वेश्चन उठा, राइटिंग प्रैक्टिस कर, खुद का बुक ऑफ हाइलाइट्स बना. सर टैक्स में क्या लोअर हायर लिमिट्स पर डे पर मंथ, सर क्या क्या रहता है सर.
लिखना खुद खुद का बुक तैयार कर, खुद सॉल्विंग कर, स्पून फीडिंग ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो. So when you face a situation, weakness can be easily converted into strength, but majority people try to run away from that particular weakness. See, there is a darkness, and कोई ने बोला कि तो वहां पे भूत है या कोई तो ऐसा प्रेत है, चुड़ैल आती है, ये आती है, वो आती है, तो उधर वो रास्ते पे कोई जाता ही नहीं है. ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन तुम फेस ही नहीं करते ना, तुम वहां पे जाने के बाद भी तुम डरना चालू कर देते हो. बचपन में तुमको कभी अंधेरा था घर में तो तुम डरते थे, छोटे बच्चे जब थे तुम पक्का डरते हो, क्योंकि आई सी माय डॉटर्स बीइंग अफ्रेड टू गो अप टू द नेक्स्ट फ्लोर व्हेन द लाइट इज नॉट देयर. क्यों? बचपन में तुमको डर था ना अंधेरे का. आज तुमको घर के अंदर डर लगता है क्या? नहीं, क्योंकि तुमने अंधेरा कभी ना कभी जिंदगी में फेस किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस किया तुमने डार्कनेस क्या है. तो तुमको अभी अंधेरे का उतना डर नहीं लगता है घर के अंदर एटलीस्ट, या सोसाइटी के अंदर, या जो नोन एरियाज है उसके अंदर. मैं तुमको बोलूं चुड़ैल वाला एरिया जाके देखो, आज तुमको डर लगेगा, लेकिन चुड़ैल वाले एरिया में मैं तुमको 10 दिन रुकवाता हूं उधर, तुम खुद चुड़ैल बन जाओगे. So point is, weakness cannot be converted into strength so easily. You have to face it. I'll just give you another small incident. कोई रेसलर का या उसका नाम मालूम नहीं है. जापान के अंदर उनका वो बॉक्सिंग वाला कंपटीशन रहता है, वट एवर द गेम इज, ऐसा हिट करने का वैसा करते हैं ना लोग, वट एवर इट इज. तो एक कंपटीशन के अंदर एक प्लेयर था, उसका हाथ टूट गया था. उसके कोच, मतलब वो बच्चा मतलब वो जो प्लेयर था वो सोच रहा था कि मैं इस कंपटीशन से क्या करूं, बाहर निकल जाऊं. उसके कोच ने उसको बोला, यू डोंट नीड टू क्विट. Why? You know your weakness. Your opponent also knows your weakness. So we know every opponent, everyone against whom you are going to play match is going to hit you on this shoulder because let's say it is broken. It was visible. Everyone was aware about it. तो यहां पर हिट होने वाला है. तो यहां पर अगर हिट होने वाला है, हमको मालूम है ये अपना वीकनेस है, यहां पर ही अटैक होने वाला है. लेट अस मेक ऑल आवर स्ट्रेटेजीज टू हिट अपोनेंट व्हेन ही ट्राइज टू हिट यू हियर. हाउ? आई एम नॉट एक्सपर्टाइज लुकिंग एट मी, बट पॉइंट क्या है, उनके कोच ने और वो प्लेयर ने मिलके पूरा का पूरा क्या किया, स्ट्रेटेजी बनाया और वो अपोनेंट को हराया. यू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ बाय फेसिंग दैट पर्टिकुलर वीकनेस. आपका वीकनेस कुछ हो सकता है. फर्स्ट आइडेंटिफाई वीकनेस एंड हाउ टू सॉल्व. डू नॉट ट्राई टू सर्च एनी सॉल्यूशन ऑन इंटरनेट और एनीथिंग, और लेट्स से यूट्यूब वीडियोस ऑफ मोटिवेशन और एनीथिंग. यू आर द बेस्ट जज to solve your own problems rather than going to someone else and trying to identify, unless until problems have gone to a level where you need a psychiatrist. आप पागल नहीं हो, आप ठीक इडियट नहीं हो, मैं आपको 1000 बार बोला हूं. तो आप, हाँ, अगर कोई साइकेट्रिस्ट वगैरह है तो जाओ. हाँ भाई, मतलब किसी के अंदर चुड़ैल वगैरह कुछ आती होगी तो वो केसेस, फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, यू कैन ट्राई टू सॉल्व, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व इट, स्मॉल इश्यूज है, वो आप सॉल्व करते जाओगे ना, आपका स्ट्रेंथ धीरे धीरे वैसे ही आएगा ना. रामभद्राचार्य को, उनको पहले गिरिधर मिश्रा, वट एवर यू से, उनको पहले वो इजी समझा होगा क्या संस्कृत के श्लोक? नहीं ना. He would be murmuring for those shloks or subhashit, whatever you say initially. He might not be able to pronounce it properly. But today, if you hear him out, boss, you will go mad. You literally go mad if you listen me out. In case you understand the high level language, without reading any single book by his own eyes or without using braille. It is all by listening. Eyes was weakness. He converted ears into strength. You find out your weakness and convert that into your strength. Thank you. All the best.